ना, नवरा बायको फेसबुकवर अनाउन्स करतात एकमेकांच्या अॅनिव्हर्सरी बद्दलच्या विशेस. मग ते वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पोजेस देऊन, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही कसं सेलिब्रेट केलंय, हाऊ मेनी केक्स यू हॅव कट अँड व्हॉट ड्रेसेस यू हॅव वोर्न, हे सगळं तुम्ही ऑनलाईन दाखवताय, पण तितक्याच इंटेन्सिटीने ते ऑफलाईन आहे का? हा माझा प्रश्न असतो नेहमी. आणि ऑफलाईन ते जर तेवढ्याच इंटेन्सिटीने तुमचं प्रेम असेल, तर ते इतकं तुम्हाला जाहीर करणं गरजेचं आहे का? नवरा बायकोच असं नाही. अगदी मुलं सुद्धा आई-वडिलांच्या डेथ अॅनिव्हर्सरीचे फोटो टाकून 10 वर्षापूर्वीची झालेली डेथ असेल तरी सुद्धा ते Facebookवरती खूप मोठं काही लिहिलं असतं. भरपूर मन व्यक्त केलेलं असतं. पण माझं म्हणणं आहे, की ते आई-वडील जेव्हा जिवंत होते, तेव्हा त्यांच्यासाठी आपण काय केलं? हा विचार महत्वाचा आहे. ते असताना आपल्याच्यानी चुका व्हायला नकोत. मुलं आपल्याजवळ असताना आई-वडिलांच्यानी चुका व्हायला नकोत. मग मुलं दूर निघून गेल्यानंतर त्यांच्याबद्दल तुम्ही काहीतरी छान सांगत राहणं किंवा प्रोजेक्ट करणं, की हाऊ दे आर वेल सेटल्ड अँड दे हॅव सो मच मनी अँड दे आर सेंडिंग सो मच मनी अँड आय एम स्टिल हॅपी. People staying in senior citizen homes, or there are places like hostels where they all buy flats together, purchase करतात घरं एकत्र and they all stay together in a colony just to feel protected, just to have the medical facilities if they need, to have friends of the same age to share their woes. पण मनातलं दुःख काही कमी झालेलं नसतं. त्या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही जाल अशा कॉलनीमध्ये, तेव्हा जाणवतं, प्रकर्षाने जाणवतं, की तिथे एंटर झाल्यापासून तुम्ही कुठल्याही कोपऱ्यात तिथे फिरलात तरी तुम्हाला 60च्या पुढचीच माणसं फिरताना दिसतील. देयर वुड बी लॉट्स ऑफ हेड्स विथ व्हाईट हेअर अँड नो किड्स अराउंड. यू नो, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, की जिथे तुमची मुलं लहान असताना तुम्ही त्यांना रेसिडेन्शियल स्कूलला पाठवायला बघता आणि ते मूल रेजिस्ट करत असतं. त्याला चांगलं शिक्षण मिळेल, गुड क्वालिटी एज्युकेशन मिळेल, त्याला शिस्त लागेल, डिसिप्लिन लागेल, म्हणून तुम्ही त्या मुलांना हॉस्टेलला पाठवता, पण त्या मुलाला ते आवडतंय का? तारे जमी पर मूवी has shown it very vividly how that small child does not want to get separated from his mom, but the family is insisting की तिकडे गेलं पाहिजे त्याने डिसिप्लिनसाठी. आणि मग तिथे गेल्यावर काय असतं, त्याच्याच एजची तशीच मुलं सगळी एकत्र राहत असतात. त्या सगळ्या एकत्र राहणाऱ्या मुलांमध्ये आनंदच असतो का? हा प्रश्न कधी कोणी त्यांना विचारतच नाही. आर दे मिसिंग आउट ऑन समथिंग? डू दे वॉन्ट समथिंग एल्स? डू दे वॉन्ट टू बी विथ द फॅमिली अँड गेट एज्युकेशन, गुड एज्युकेशन? दिस इज नेव्हर आस्क्ड. And same is the story with senior citizens today. When the children just go away, आपला देश सोडून निघून जातात किंवा गावात असले तरी वेगळे राहतात किंवा दुसऱ्या शहरांमध्ये राहतात आणि आई वडील एकटेच राहत असतात आणि ते उसना अवसान आणून लोकांना सांगतात, आम्ही खूप हॅपी आहोत, आमच्याकडे देवाने दिलेलं सगळं काही आहे. जेव्हा की प्रत्येकाच्या मनात ते बोचत असतं, की मला माझी मुलं, माझी नातवंड माझ्या भोवती हवी आहेत. तिथे कुठेतरी एक इम्बॅलन्स होतो. एकच केमिकल एका ठिकाणी राहून चालेल का? फॉर अ गुड रिएक्शन देयर हॅव टू बी 2 केमिकल्स, 3 केमिकल्स, तरच ती रिएक्शन होईल. सिंगल केमिकल बीइंग समवेअर इज नो रिएक्शन, इज नो लाईफ. इट्स नॉट अ हॅपनिंग सिच्युएशन. So all 3 generations being together is always a win-win situation for every family and we have to strive to achieve that. मी म्हटलं तसं शक्य असेल तेव्हा तुम्ही एकत्र राहा. शक्य नसेल तरी ऍक्सेसिबल राहा. बी क्लोज टू इच अदर. शेजारचे फ्लॅट्स घेऊन राहा. म्हणजे तुम्हाला तुमची प्रायव्हसी पण राहते आणि तुम्हाला मदत लागली तर मदतही करता येते एकमेकांना. यू ऍटलीस्ट सी इच अदर एव्हरी डे. You need not spend long hours together. Few minutes together is also good enough. Just a glimpse of your child or glimpse of your parents gives you that happiness and comfort ki yes, we are together. जगात आहे दुसरं काय हा विचार
तुम्ही हेडॉनिक गोष्टींकडे, म्हणजे तुम्हाला मटेरियल गोष्टींकडे अट्रॅक्ट होऊन तुम्हाला पैसा हवाय, गाडी हवी आहे, घर हवंय, खूप प्रॅक्टिस हवी आहे, तुम्ही वर्कहॉलिक आहात, 24 तास हॉस्पिटल आहात किंवा तुमच्या ऑफिसेसमध्ये आहात जिथे काम करताय, घर आहे, म्हणायला कुटुंब आहे, म्हणायला बायको आहे, मुलं आहेत, पण तुम्ही त्यांच्याशी खरोखरी किती इन्व्हॉल्ड आहात? किंवा घरी आल्यानंतर जर का मुलाचा आईचा काहीतरी चालू असेल डिस्कशन अभ्यासावरून, आई रागवतीये मुलाला, तर वडिलांनी येऊन काय करायचंय? अजून मुलाला परत रागवायचंय का? This is what normally happens because we carry the stress that we have outside into our home. So if you see that something is going wrong in the family, you just come in to add into it. But then you are being a bad catalyst. कुठे फायर लागलाय तिकडे ऑक्सिजन बनू नका. Try to be a fire extinguisher. Just be quiet or just don't do anything. Inert राहा. Let them handle it between themselves. जे काय घरात होत असेल ना, ते त्या दोन व्यक्तींना आपसामध्ये हँडल करू द्यावं. ती तेवढी मुभा द्यावी. त्या प्रत्येकाला तेवढा अधिकार असतो एकमेकांवर. मुलांना सुद्धा व्यक्त होण्यासाठी तसं वातावरण लागतं. If all the time there are parents who are doting, who are constantly expressing their wish की तुला एवढे मार्क मिळाले पाहिजे, that you have to get into best of the college, that you have to become a doctor, and this wish is not secretly but very openly expressed all the time, the child is under pressure. कुठे आहे फ्रीडम टू एक्सप्रेस? त्या सुनेला सुद्धा घरातल्या जर गुदमरत असेल त्या वातावरणामध्ये, तिचं माहेर वेगळंय, तिचं सासर वेगळंय, सवयी वेगळ्या आहेत, तिच्या सवयी जर ऍक्सेप्ट होत नसतील नवीन घरामध्ये, ऑल द टाइम इफ दिस फॅमिली इज ट्राइंग टू टेल हर आपल्याकडे असं असतं, आपल्याकडे असं असतं, आपल्याकडे असं असतं, अरे तिच्या घरी काय होतं तेही समजून घेणं गरजेचं असतं त्या फॅमिलीने. मला वाटतंय तुम्हाला हे सगळं पटत असेल, कारण प्रत्येक स्त्री आपल्यापैकी जी आहे ही यातून गेलेली असते. की आपण माहेरून जे काही जगलो असतो, जे काही 20-25 वर्ष, आता काळ वाढलाय, आता 30 वर्ष माहेरी असतात बहुतेक मुली. कारण 27, 28, 30च्या आधी लग्नच करत नाहीयेत. आणि कधी-कधी तर त्यानंतर करायचंच नाही लग्न अशा निर्णयाला येतात. कारण मग विचार पक्के होतात, की नाही माझं आता कुठेच ॲडजस्ट होऊ शकणार नाही मी दुसऱ्या कोणाबरोबर. एका याने असं वाटतं, की जुन्या पद्धती बऱ्या होत्या. थोडंसं लवकर लग्न झालं तर किमान एक, म्हणजे इट्स नॉट कंपल्सरी दॅट यू नीड टू गेट मॅरिड. आय अग्री. It's not necessary that you need to have a husband or a wife. You can live all by yourself. Yes. But then you have to define what is. Am I right? It is again an individual decision. Like we are now openly accepting now we are openly accepting ki gays ahet, lesbians ahet, people are into live-in relationships, into anything. कायद्याने सुद्धा 377 मॉडिफाय केलं. तो लिगली नाही केले. मॅडम हे थोडं रेकॉर्डिंगचा इश्यू काय होतंय, डिस्टर्ब होतंय. आय एम रिअली सॉरी टू से बट Yeah, it is coming from Varsha. येस मॅम, कोणीतरी को होस्ट आहे ना ते क्लिक करते, स्टॉप करते. हा, बिकॉज प्लीज स्टॉप नका करू. Okay. yeah, sorry. So like we have been accepting all kinds of relationships today, आणि त्या ओपनली एक्सेप्ट कराव्या असं मला माझ्या लेक्चर्स मध्ये कॉलेजचे स्टुडंट सांगतात. Few years ago, when this was not discussed so much, and in my gender sensitization lectures, I used to say that yes, focus on your studies, focus on your career, at least till the age of 25. Else तुम्हाला रिव्हर्स मध्ये गाडी न्यावी लागेल. आधीच प्रेम केलं, आधीच सगळे उद्योग केले, अभ्यास राहिला बाजूला, काही करू नाही शकला तर नंतर करिअर इस्टॅब्लिश करणं डिफिकल्ट होतं. सो यू हॅव टू गेट मॅरिड, अ गर्ल विल फाइंड अ बॉय वगैरे असं सगळं उल्लेख केल्याबरोबर एक मुलगी उभी राहिली आणि मला म्हणाली, वाय अ गर्ल शुड फाइंड अ बॉय ऑलवेज? म्हणजे तिने एका मुलाशीच लग्न करणं हे कंपल्सरी असं तुम्ही म्हणताय का मॅडम? असं मला विचारलं होतं. आय जस्ट इमिडिएटली रिट्रॅक्टेड माय स्टेटमेंट. आय सेड नो नो नो, फ्रीडम आहे म्हटलं सगळ्यांना, ज्यांना जे चूज करायचं लाईफमध्ये यू कॅन चूज, नॉट अन इश्यू. बट दिस इज व्हॉट आय हॅड टू से, बिकॉज दिस इज टुडेज जनरेशन. दे हॅव क्वेश्चन्स ओव्हर एव्हरीथिंग अँड दे एक्सपेक्ट अस टू एक्सेप्ट एव्हरीथिंग दॅट दे डू. ठीक आहे, हरकत नाहीये, पण ऍटलिस्ट आपल्या वागण्यातून आपण एक चांगलं उदाहरण त्यांच्या पुढे ठेवायचंय. म्हणून ही जी केमिस्ट्री आणि फॅमिली इक्वेशन जे आहे, 3 जनरेशन्स एकत्र राहताना जर सिनियर जनरेशननी नवीन मुलांच्या विचारांना जर का कायम त्याच्यावरती क्रिटिसिझम केलं तर ते रिॲक्शन तिकडेच थांबणार आहे. देअर वोंट बी एनी केमिस्ट्री. इवन लहान मुलांच्या लहान लहान गोष्टी ते शाळेतनं आल्यावर जेव्हा आई वडिलांना, आजी आजोबांना सांगत असतात,
तेव्हा जर का आपण लक्ष देऊन ऐकलं नाही त्यांचं, इग्नोर केलं म्हणजे अननोईंगली, नकळत आपण म्हणतो की अरे रोज येऊन ही पोर मला सांगते, आज हा माझ्याशी भांडला, आज माझा डब्बा सांडला, आज टीचर रागवल्या, आणि ह्या लहान लहान गोष्टी आपण इग्नोर करतो कारण आपल्याला वाटतं त्याला महत्व नाहीये. पण ही गोष्ट त्यांच्या मनामध्ये खोलवर रुजते आणि मोठं झाल्यावर त्यांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या मोठ्या गोष्टी पण ते आपल्याला सांगणार नाहीत, हे गृहीत धरा. So if you want every person in the family to share their personal life with us, एकच करायचं आहे की कायम आपले कान त्यांच्याकडे असले पाहिजे. बी अटेंटिव्ह, लिसन टू देम. और इवन तुमच्या नजरेने तुम्हाला कळतं की समोरची व्यक्ती डिस्टर्ब्ड आहे आज, ते इग्नोर करू नका. तुमच्या कुटुंबातल्या कुणाच्याही चेहऱ्यावरचं एक्सप्रेशन जर बदललेलं असेल, इफ यू फील दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टुडे, इज नॉट ईटिंग वेल, सीम्स टू बी विथड्रॉन, खोलीत जाऊन बसलाय, तर ती गोष्ट स्वतःच्या तुमच्या कामाच्या व्यापामध्ये तुम्ही इग्नोर केली असं होऊ देऊ नका. कारण ते खूप महत्वाचं आहे आणि मग नंतर त्या गोष्टी इतक्या पुढे जातात की तुम्हाला थेरपिस्टची गरज लागू शकते. वी हॅव सीन गुड एज्युकेटेड पीपल म्हणजे आता कॉमन मॅनचं जाऊच द्या, आपण अनेस्थेसिओलॉजिस्ट आहोत. वी नो हाऊ मेनी ऑफ अस हॅव फेल्ट की आय डोंट हॅव एनी सपोर्ट इन दिस वर्ल्ड अँड दे हॅव एंडेड देअर लाईफ. आणि ह्या अशा अनेक घटना ज्या आधी घडल्या, दरवेळेस मला वाईट वाटलं की का काउन्सिलिंग नाहीये, का कम्युनिकेशन नाहीये, इज देअर अ कम्युनिकेशन गॅप, आर वी फेलिंग समवेअर. मग हे फेल नाही व्हायचंय. मुलांकडनं जशी मार्कांची अपेक्षा करतो ना, तसे स्वतःलाही तुम्ही 100पैकी 100 देऊ शकणार आहात का, हे प्रत्येकाने विचार करायचा आहे. एव्हरी डे इट्स अ एक्झाम फॉर अस. प्लीज अंडरस्टँड. Living together, maintaining a family, having a good cordial relation, and not only within your family but with your colleagues also outside. प्रत्येक गोष्ट तुमचा स्वभावच त्याच्यावरती ठरतो की तुम्ही कसं स्वतःला मोल्ड करताय. तुम्ही समोरच्यातल्या चांगल्या गोष्टी बघून त्याला चांगलं म्हणायला शिकताय का, तेवढं तुमचं मन मोठं आहे का, की तुम्ही समोरच्यातल्या खोड्या काढून त्याच्याबद्दल गॉसिप करताय का. जसं मगाशी म्हटलं, सासूने जाऊन सुनेबद्दल गॉसिप करणं, सुनेने ऑफिसमध्ये जाऊन सासूबद्दल गॉसिप करणं. I would love to share one small thing now. My son got married this December. मी आत्ताच सासू झाले, नवीन एकदम फ्रेश. आणि माझी सून जेव्हा तिच्या ऑफिसमध्ये रिझ्यूम झाली, तर तिला पहिलं सगळ्यांनी काय विचारावं, तुझी सासू कशी आहे ग? आणि कुठे गेली, नातेवाईकांकडे गेली की एकच प्रश्न, तुझी सासू कशी आहे? ओ माय गॉड. अँड दॅट रिअली ट्रबल्ड हर सो मच की ती चिडचिडली आणि मला फोन केला. आई म्हणे, असं का सगळेजण फक्त सासूबद्दलच विचारतात? कोणी मला नंदेबद्दल विचारत नाहीये, सासरे कसे आहेत, फादर इन लॉ कसे आहे, सिस्टर इन लॉ कशी आहे, तुझ्या नवऱ्याला भाऊ आहे का, बाकी फॅमिली. Nobody is interested in knowing anything else in the family except how is your mother-in-law. So she was amused and then she had her answer ready. तिने असं छान रटवून ठेवलं होतं. ती सगळ्यांना सगळं काही सांगते, माझ्याबद्दल कौतुकाने सांगते की काय काय करतात माझ्या सासूबाईंवर, आजच्या स्टाईलनी सांगते. त्या ना एकदम चिल्ड आहेत, एकदम आपल्यासारखे आहेत म्हणे, असं सांगून ती कौतुकाने त्यांना गप्प करते. सी द chemistry between us, the relationships that we develop, the innocence that we treasure, ह्या गोष्टी खूप, द ट्रान्सपरन्सी while giving them their privacy. प्रत्येकाने प्रत्येकाला ऑनेस्ट असणं एकमेकांशी गरजेचं जितकं आहे, तितकं प्रायव्हसी देणं पण गरजेचं आहे. प्रत्येक वेळेस जाऊन एखादी व्यक्ती जर आपल्या कुटुंबातली रडताना आढळली, नाराज आढळली, तर जाऊन लगेचच्या लगेच रागवू नका की काय झालंय सांग, काय झालंय सांग. एस्पेशली इफ दॅट इज युअर चाइल्ड. आपली मुलगी, आपला मुलगा लहान असताना जर असं झालं ना, तर आई वडिलांना पेशन्सच नसतो. आत्ताच्या आत्ता सांग काय झालंय, आत्ताच्या आत्ता सांग तू कुठे जाऊन आलीस. असं नसतं ते. आत्ताच्या आत्ता होत नाही. काही केमिकल रिॲक्शन्स स्लो असतात. त्या स्लोच राहू द्यायच्या असतात. त्या फास्ट केल्या ना तर एक्सप्लोजन होतं. सो त्या स्लो रिॲक्शन्स कशा राहत असतील, त्याच्यातनं कसं चांगलं निघेल, तुम्ही केव्हा फक्त केअरिंग आणि सपोर्टिव्ह राहायचंय एकमेकांसाठी, केव्हा थोडंसं स्ट्रिक्ट राहायचंय, हे जमलं पाहिजे.
हे समजलं पाहिजे, हे उमजलं पाहिजे, कळलं पाहिजे आणि वळलंही पाहिजे. कळतंय पण वळत नाही हे एक्सक्यूज नेहमी द्यायचं नाही. आणि अनेक वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर ना आपोआपच ते प्रेम वाढतं. आणि भांडणं होतात, ती होणार आहेत, ती होऊ द्यायची. थोड्या थोड्या ठिणग्या उडणारच आहेत, त्याच्याशिवाय आयुष्याला मजा नाही. फक्त हळू आवाजात भांडायचं बरं का? नाहीतर 4 भिंतींच्या आत भांडण झाल्याबरोबर पहिला प्रश्न मग नंतर मनात येतो. शेजाऱ्यांनी ऐकलं असेल का? बाजूच्या बंगल्यात ऐकू गेलं असेल का? रस्त्यावरनं कोण जाणारे ऐकलं असेल का? ठिणग्या उडू देत छोट्या-छोट्या बरं का? एकदम मोठा बॉम्ब फटाका नको. छोटे-छोटे भांडणं असतील पण त्यातून प्रेम वाढतं. आजच्या नव्या पिढीला पण एक सांगायचं आहे, की इमिडिएटली या निर्णयाला यायचं नाहीये, की आपलं पटत नाहीये. विल इट वर्क आउट पासून सुरुवात करायची नसते नात्याची. इट विल वर्क आउट. वी हॅव टू स्टे टुगेदर. कुठलाच माणूस 100% चांगला किंवा 100% वाईट मिळूच शकत नाही. प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या क्वालिटीज असतात कमी जास्त प्रमाणात. इफ यू लुक इन द मिरर यू विल नो की स्वतःच्या पण किती निगेटिव्ह पॉइंट्स आहेत. तरी आपल्याला कुटुंबातले बाकी लोक झेलतात ना. समाजातले इतर लोक, आपले कलिग्स आपल्याला टॉलरेट करतात ना. इट्स नॉट दॅट वी आर ऑल परफेक्ट. नोबडी कॅन बी परफेक्ट. सो दॅट इज आय एम सेइंग, जरी टायटल असलं अ परफेक्ट इक्वेशन, it cannot be a perfect equation, mind you. And never strive to make it a perfect equation. Just try to make it a happy situation. Can we do that? Yes, we can do that. So happy situation करण्यासाठी ज्या बेसिक गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत त्या आपण पाळायच्या आहेत, ते नियम थोडेसे पाळायचे आहेत आणि असाच आपण आनंद एकमेकांना देत राहायचा आहे. मला मॅडमनी सांगितलं होतं की वी हॅव टू स्टिक टू टाइम लिमिट 20 मिनिट्स. सो माया मॅडम, डू आय हॅव सम मोर टाइम और आय शुड एंड? व्हॉट एव्हर. मॅडम, आय कॅनॉट हिअर यू. हॅलो मॅडम. हा बोला बोला. I just wanted to know how much time I have because we started. Madam, we are running behind the schedule. I know, so I think I will end. We started late also, so let's finish Exactly. it off. That is why I'm not Yeah. going ahead further now. Yeah. But the take-home message is कि there is no perfect equation. So chemistry तुमची जी काही असेल ती छोट्या छोट्या ठिणग्या उडत राहिल्या तरी त्या होऊन देत. स्लो रिॲक्शन्स या स्लो रिॲक्शन्सच राहू देत. अँड कॉर्डियली राहून हॅपीनेस कसा तुम्हाला त्या इक्वेशन मध्ये आणता येईल एवढंच बघायचंय. So strive to make it a happy equation, not a perfect equation. That is a family chemistry. Stay together, stay happy. God bless all of you. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, Swati madam, for a wonderful talk. As usual, it's our pleasure to listen to you always. Madam, I request you to accept the floral e-bouquet as a token of gratitude from our branch. Varsha. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Loved all the roses that you've given. Thank you, ma'am. Moving ahead, I request our president, Dr. Maya Bhalerao madam, to introduce our next speaker and carry ahead our program. Maya madam, please. I'm just sharing the slide. Can you see Seema and can you listen to here? Yeah. Am I audible? Yes, madam. We can see your slide. Yes, madam. You're audible and we can listen to you also. Okay, thank you so much. Respected ISC national dignitaries, Dr. Naveen Malhotra sir, Anjali Bhure madam, State President MSc ISA, Dr. Manisha madam, all dear delegates. I, Dr. Maya Bhalerao, President, bring warm greetings for each one of you from ISA Pimpri-Chinchwad city. It gives me immense pleasure to introduce today's speaker and the dynamic doctor who has learned to fly high in the sky without boundaries, without wings. Friends, let me tell you, when she was just 15 years old, as a teenager, she has come across very devastating incidents. She was thrown into complete darkness in the life. There was no ray of hope to live, but she chose to challenge and took the challenge to change the circumstances. How? She asked God for strength. He gave her not only difficult situation, but he gave 3 worst combi pack to face and fight. And that's how he gave her strength. She fought for financial crunch
and prejudice against the education. She fought for the legal system against her, and she fought for both bilateral leg amputation. Still, dropping out of school never happened to her, or maybe with her parents. Mother took her to school for theory and practical exams on a wheelchair in 12th standard. Her mother used to say, "Beta, do not see the disability, find out the ability in you." And that's how she went ahead. This is a picture taken by Mumbai Times. See the smiling face, see the confidence. संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है. संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना है. और वो चलती रही. कोई चिराग की रोशनी जलाता नहीं सलीके से. कोई चिराग की रोशनी जलाता नहीं सलीके से, सभी को शिकायत तो हवाओं से होती है. फ्रेंड्स, शी डिड नॉट गेट नर्वस. मायूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी आंखों में मंजिल थी. उसके आंखों में मंजिल थी. लड़खड़ाते और संभलते रहे. दिल की अरमा पूरे करने हवा में भी चलते रहे. फ्रेंड्स, because she stood third in Maharashtra under physically handicapped quota in CET for medical in 2011. She was refused admission as she had 89% disability certificate, and the disability criteria to get admission in medical was 40 to 70%. See the difference. और जिसने कोई हाई कोर्ट को कानून बदलने पर मजबूर कर दिया और फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई. She appeared before the court despite the physical and financial difficulties. हिंदुस्तान की आयरन लेडी, इनके लिए देश का 20 साल पुराना कानून भी बदल गया. Senior lawyer VP Patil attended her case pro bono, that means without charge. He showed the court that she can travel the court proceedings every time from Jogeshwari by a local train on herself. The court passed judgment in her favor and gave her justice. She created the history by changing the law restricting one's progress. MLA Amin Patel sponsored her medical education. Member of Parliament Kirit Somaiya went to Delhi and spoke to Union Minister JP Nadda about her, and he could proceed for the post-graduation admission for her. So friends, can you see the happiness on the face of her and as well as her parents? See the confidence. अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने की कोशिश में लग जाती है. And that is very, very true. Everybody helped her. जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होती है. जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होती है. Really, this is really incredible. She has climbed all her steps like education, success, and now she speaks from her heart. She tells a story which is really, really, we can elicit the emotional explosion within us. She has turned into an inspirational leader, and she has 2 billion views on YouTube. She has inspired many. You can see the pictures. The question is not who is going to let me. The question is not who is going to let me, but who is going to stop me. The unstoppable, the incredible, one and only one, Dr. Roshan Jahan Sheikh. I present to you Dr. Roshan Jahan Sheikh, and after listening to her, I'm sure you will wake up with a new vision tomorrow morning. Over to you, Dr. Roshan. Thank you so much. I'll stop sharing slide so that Roshan can take over. Hello, good evening, everyone. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, you are audible. Yeah, but you are not visible. No, she is visible, madam. Yeah, she is visible. Yeah. She is visible. सुनाई भी आ रहा है. Okay. First of all, I thank Almighty Allah for all His blessings. And I thank SAPC, Dr. Maya, Dr. Anjali, Dr. Naveen, Dr. Manisha for inviting me here. And it is very, I am feeling honored to be here because all our doctor association, so
this is the second time I am inviting in a association of doctors. So I am little bit nervous as I am a motivational speaker, but I respect all doctors, and being a doctor, I know how and कितना कीमती होता है हम सबका वक्त एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए। मैम ने बहुत कुछ मेरे बारे में बता दिया है, बट फिर भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख है। मैंने एमबीबीएस किया है फ्रॉम सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल से, एंड 4 to 5 months ago I have cleared my MD pathology degree same सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल। तो मेरी जो स्टोरी है वो इसीलिए यूनिक है, एंड सब लोगों को लगता है कि मे बी ये इंस्पायर करती है तमाम लोगों को, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में काफी चैलेंजेस को से लड़ा है, मैंने फाइट किया है सबके साथ। बिकॉज मैं एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी हूँ। फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हम 4 भाई बहन हैं, और बचपन से ख्वाब था डॉक्टर बनना है, कोई मेडिकल फील्ड में जाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, लोगों को हेल्प करना है। तो 2008 में मैंने एसएससी में 92% लेकर टॉप किया इन जोगेश्वरी, और फिर 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। मेरा जो घर है वो जोगेश्वरी में था और कॉलेज जो है वो बांद्रा में था, तो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी डेली। इन 2008 7 अक्टूबर दिस वाज द डे जिस दिन मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे सेमेस्टर के पेपर थे, मैं पेपर देकर कॉलेज से घर जा रही थी, और मैंने रोज की तरह ही लोकल ट्रेन पकड़ी बोरीवली की। मैं फर्स्ट कोच में थी और ट्रेन 12 डब्बों की थी, बट जब ट्रेन चली और अंधेरी से ट्रेन स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा मैं अपनी सीट से आगे आऊं नेक्स्ट स्टेशन, बिकॉज मेरा है जोगेश्वरी स्टेशन। तो मैंने सोचा कि मैं बस अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक आने की कोशिश में, वो एक लम्हे में मैं चलती हुई ट्रेन से गिर गई, और मैं 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से गिरी, और उस ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। मेरा जो राइट लेग है वो अबाउ नी एम्प्यूटेड है और लेफ्ट लेग इज बिलो नी एम्प्यूटेशन। मैं वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही विथ हैवी ब्लीडिंग, और मैं आई वाज कॉन्शियस बिकॉज मैं देख रही थी अपने आप को कि मेरा एक पैर रेलवे ट्रैक पर कटकर पड़ा हुआ है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। आसपास कोई भी नहीं था हेल्प के लिए, बिकॉज मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी, तो लोगों को आने में काफी टाइम लगा। बट जब लोग आए तो उन्होंने हेल्प नहीं की मेरी, मेरे पास फोन भी नहीं था। फिर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर भी ऑपरेशन स्ट्राइक चल रहा था। मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला शाम तक। मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ, मॉर्निंग में 10-11 o'clock, एंड देन इवनिंग तक मैं ऐसे ही ट्रॉली पर पड़ी रही। फिर जब मेरी फैमिली आई, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहां से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 2-3 months आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड ड्यूरिंग दिस फेज बहुत सारे लोग आए मुझे देखने के लिए, बहुत से कंसोल करते, बहुत से लोग ऐसी बातें बोलते कि आई वाज जस्ट 16 years old व्हेन दिस एक्सीडेंट वाज हैपेंड। तो जब 16 साल की उम्र में एक फैमिली ऑलरेडी बहुत परेशान थी, फाइनेंशियली वीक थी, तो जब लोग आते मुझे देखने तो बहुत बोलते कि 16 साल की उम्र में दोनों पैर नहीं है बच्ची के, डिसेबल हो गई है लाइफ टाइम के लिए, ये खुद से मूव नहीं कर पा रही है, इसको तो जिंदा नहीं रहना चाहिए था, इसको ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। बट ये सारी बातें मैं भी सुनती हूँ, और आई वाज जस्ट 16 years old, तो मुझे भी नहीं समझ आता कि एक्चुअली में मैं जिंदा क्यों हूँ। मेरे 2 पैर 1 मिनट में मुझसे छीन गए। मतलब मैंने क्या किया था ऐसा जिंदगी में जिससे मेरे दोनों पैर नहीं रहे। तो मैं मम्मी से बहुत पूछती, अल्लाह से पूछती कि आपने जब मुझसे 2 पैर छीन लिए तो मुझे जिंदा क्यों रखा। लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि आपके सिर्फ 2 पैर गए हैं,
यू हैव समथिंग इन यू जो मे बी आगे बहुत कुछ दुनिया को दिखा दे। तो मैंने उनकी बातों पर यकीन रखा, अल्लाह पर यकीन रखा कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है अभी, तो मे बी फ्यूचर में बहुत बड़ा हो मेरे लिए, इसका मे बी मुझे रिवॉर्ड मिले। तो ये एक सोच थी। और फिर मैंने अपना स्टडी क्विट नहीं किया, मैंने 11th किया, 12th किया व्हील चेयर पे, सीईटी में 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। और आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज हैप्पी कि नाउ आई विल गेट एडमिशन इन मेडिकल। तो मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा डॉक्टर बनने का। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मेडिकल लॉ है उसके बेस पर मुझे डिनाई मिला मेडिकल काउंसिल से, बिकॉज आई वॉज ए 96% डिसेबल। और टू गेट एडमिशन इन मेडिकल फील्ड you have to be a person should be 40 to 70% disabled. So I was more than 70% disabled, 96% disabled. So they denied me on a first day of counseling. एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कोई भी एक मेडिकल लॉ के अगेंस्ट कैसे जा सकता है। देन आई कॉल्ड माय ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय कंथारिया हु इज माय मेंटर टिल नाउ। ही इज नॉट जस्ट अ डॉक्टर एंड डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप है हमारे साथ, बट उन्होंने यहाँ तक मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे मेंटोरशिप दी अपनी। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस करो, और बॉम्बे हाई कोर्ट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर यू। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 मेरे राइट्स के लिए कि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, बिकॉज तब तक मैंने अपने आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक से चलना सीख लिया था। मैं 2 क्रचेस यूज करती थी और बहुत ही अच्छे से मैं अपनी डेली लाइफ जी रही थी। बट ड्यू टू दिस लॉ आई वॉज डिनाइंग एडमिशन। देन बॉम्बे हाई कोर्ट गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में 2-3 महीने मेरी हियरिंग हुई। उन 2-3 महीनों में बहुत कुछ मैंने झेला, बहुत कुछ नाउम्मीद हुई, मायूस हुई, डिसअपॉइंट हुई मेडिकल लॉ से, डॉक्टर्स से, मेडिकल काउंसिल से कि ये जो लॉ है इसकी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल थिंग। बट in 2011 in August I got Bombay order, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर इन माय फेवर। और उसके बाद से दिस वाज अ मुंबई फर्स्ट केस, मुंबई में ये पहला केस था कि कोई 96% डिसेबल गर्ल को एडमिशन मिला है मेडिकल में, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। तो बहुत मीडिया कवरेज मिला और उसके बाद से मैंने एमबीबीएस क्लियर किया सीजीएस मेडिकल कॉलेज केएम हॉस्पिटल से। और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मिला मुझे मुझे कभी भी ये फील नहीं कराया गया कि आप डिसेबल हो, आप 2 क्रचेस पे चल रहे हो, आप किसी से कम हो। मुझे टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। संजय ओक सर डीन थे उस वक्त, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। एमएलए अमीन पटेल सर का सपोर्ट मिला फाइनेंशियली। तो काफी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और मैंने हिम्मत नहीं हारी। एज आप सब डॉक्टर्स हो, आप सबको पता है कि एमबीबीएस में एक उर्दू मीडियम से बिलोंग रखने वाली जो स्टूडेंट है उसको कितनी डिफिकल्टीज फेस आई होगी। बट मैं बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की, अल्लाह पर यकीन रखी और 2016 में मैंने फर्स्ट क्लास से अपना एमबीबीएस क्लियर किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने जब जब लोग मुझे देखने आते थे एक्सीडेंट के वक्त, तो लोगों का एक ये सोच होता था, एक थॉट होता है कि जो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पर्सन हो, अगर वो अपना एक्सीडेंटली या बाय बर्थ डिसेबल हो, स्पेशली एबल्ड हो, तो उस फैमिली को ये बोल कर जताया जाता है कि ये बच्चा आपके ऊपर बोझ रहेगा जिंदगी भर। ये ना सोसाइटी को कुछ दे सकता है, ना फैमिली को कुछ दे सकता है, ना अपने कंट्री को कुछ दे सकता है। बट मुझे ये लोगों की सोच चेंज करनी थी कि अगर मैं 96% डिसेबल होने के बाद मेरे पास 2 पैर नहीं है, उसके बाद और अगर मैं फाइनेंशियली इतनी वीक हूँ, एक वेजिटेबल वेंडर की डॉटर हूँ, ये सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं लाइफ से। एकदम छोटी, अगर हमारी जनरेशन जो स्टूडेंट की जनरेशन है उसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे, अगर किसी को कोई कम मार्क्स आया तो पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं, स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपनी स्टडी से कि मेरा मार्क्स कम आया है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं फाइनेंशियली, मेरी माँ बाप की कंडीशन थोड़ी सी वीक है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है।
तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो सोशल स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, मुझे इसको ब्रेक करना था, जस्ट टू शो एवरीवन कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी ऑड्स के बाद भी जब मैं कर सकती हूँ, तो आप लोगों के पास तो 100% एबिलिटी है। आप लोगों के पास 2 पैर है, हाथ है, आंख है, नाक है, सब कुछ है। आप लोग एक कंप्लीट इंसान, ह्यूमन बीइंग हो, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये प्रूफ मैंने एमबीबीएस पास करके कर दिया, बट मुझे मेडिकल की हायर डिग्री भी अचीव करनी थी, तो मैंने सोचा मुझे एमडी में भी एडमिशन लेना है। तो मैंने नीट पीजी क्रैक किया, 3rd रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र लेकर। बट डिस्पाइट ऑफ क्लियरिंग एमबीबीएस विद फर्स्ट क्लास एंड टेकिंग रैंक 3rd रैंक इन नीट, मुझे अगेन डिनाई मिला मेडिकल काउंसिल से कि आप अभी भी 96% डिसेबल हो, आपको हम एमडी में एडमिशन नहीं दे सकते। This time I have only 2 days because this was a process was a online. So मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊं, 2-3 मंथ्स में बॉम्बे हाई कोर्ट की हियरिंग में लगाऊं, तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता। बट अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ते क्लियर करता है, ये यकीन था मुझे। तो बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सुमैया सर का कॉल आया, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने ऑन द स्पॉट फ्लाइट ली, वो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली गए, और दिल्ली में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के सामने मेरा एप्लीकेशन रखा, मेरी प्रॉब्लम्स उनको बताई, और वहां से ये जो मेडिकल लॉ है 40-70%, दिस इज अ 20 years ओल्ड लॉ, मेडिकल लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और यू वोंट बिलीव कि ये जो लॉ है विद इन 2 days मेरी एप्लीकेशन पे चेंज हुआ, और ये इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि एक स्पेशली एबल कैंडिडेट की एप्लीकेशन पे कोई 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ। एंड देन अकॉर्डिंग टू माय रैंक आई गॉट सेम State GS Medical College in KM Hospital MD Pathology degree in 2018, and now I have completed MD Pathology degree with I have secured 4th rank in KM Hospital in pathology department and 21st rank in all over Maharashtra in pathology. So आप सबको ये सारी चीजें बताने का एक ही मकसद है कि हम हमारी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, और इतने ज्यादा डरते हैं कि हम सुसाइड की बातें करने लगते हैं। हमारे स्पेशली जो बच्चे होते हैं आजकल के, वो मार्क्स से डर जाते हैं, पेरेंट्स ने थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दिया तो उससे घबरा जाते हैं, जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि आपको मायूस नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एबिलिटी होती है कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। ऊपर वाला हमें उतना ही प्रॉब्लम देता है जितना हम झेल सकते हैं। और आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुंबई का पहला केस था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके बाद काफी जो स्पेशली एबल कैंडिडेट्स है उनको एक नया वे पता चला कि हम इस तरह से भी एडमिशन ले सकते हैं। और ड्यूरिंग एमडी एडमिशन ये जो लॉ है वो चेंज होके इतने सारे जो स्पेशली एबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक नया राह खुल गया कि उन्हें अब बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने अगर चुना है बहुत सारी डिफिकल्टीज के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको पॉजिटिव वे में कंसीडर किया है कि मेरी वजह से अगर पीछे मेरे आने वाले मेरे भाई बहनों की राहें खुलती है, तो क्यों ना मैं ही इन चीजों से लड़ूं। और आप सबको यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, डॉक्टर्स हैं, नॉन मेडिको है, आप सबको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप लोग अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने गॉड पर यकीन रखिए। हैव अ फेथ इन ऑलमाइटी कि आपको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है, छोटी है बड़ी है, बट 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे बस यही कहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में अगर कोई गोल है तो उसको उसके लिए जी जान कर मेहनत कीजिए। बिकॉज अगर मैं 15 साल पहले ये सोचकर निराश होकर बैठ जाती और गिव अप कर देती कि मेरे पास, मैंने तो कुछ ऐसा लाइफ में किया नहीं, तो मुझसे 2 पैर क्यों छीन लिए एक्सीडेंट में, और अगर मैं बेड रिडन ही रहती तो आज तक मैं बेड रिडन रहती और एज ए एमडी पैथोलॉजिस्ट, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपसे यहाँ पर बात नहीं कर रही होती। तो बात सारी फेथ की होती है ऑलमाइटी पर, बात सारी हौसले की होती है।
एक करेज की होती है, एक जज्बे की होती है कि हमें अपनी कंट्री को कुछ रिटर्न देना है, बिकॉज कंट्री ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम बहुत लकी है, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम इंडियन है। बहुत प्राउड है मुझे इस बात का, और बहुत प्राउडली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद ये है कि मैं अपने कंट्री के लोगों की हेल्प करूं, मैं उन्हें मोटिवेट करूं, और हम सब लोग एक साथ मिलकर अपनी कंट्री को आगे लाएं दुनिया में। तो एक छोटा सा जो शेर है, मैं आप सबको कहना चाहूंगी, सिर्फ कहने से नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। सिर्फ कहने से नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। Thank you so much everyone for listening me this humble state. Thank you so much. Maya ma'am, thanks a lot for inviting me here. Thank you, Roshan madam. Thank you, We are Maya very madam. proud because I am from the same institute. We are really proud of you. Yeah. Roshan ma'am, it's really hats off to you, your strength and your perseverance. शायद आपके बोलने के बाद हम बोल ही नहीं सकते कुछ, फिर भी once again a very thank you from the whole team of doctors and all the listeners who are there, who were there with us today to listen to you. Madam, please accept our e-bouquet from every one of us. Thank you, ma'am. It's mean a lot to me. Thanks a lot. Thanks a lot, madam. Maya madam, पुढे घेऊ मी? हो. Yes. Now I request Dr. Manisha Katikar madam to say a few words. Today's motivational speaker, Dr. Roshan Sheikh, Dr. Swati Gadgi, respected Vice President ISA National, Dr. Anjali Bhure, Secretary Dr. Naveen Malhotra sir, and team SAPC. Heartiest congratulations to you. And I must say, Dr. Roshan, after listening to you, such an incredible journey. And I'm highly impressed, and I must tell you that along with me, my mother-in-law, who is 84-year-old, and my daughter, who is pursuing her medicine and is in final MBBS, is also sitting next to me, listening to you. And so many of family members of Maharashtra State ISA and others who have joined this program with their family members. Hello. It was really nice listening to you and listening to Swati madam. Thank you, Maya madam, for such an excellent program. Thank you very much. Can speak. Thank you, madam. Sorry, there's a problem from my side, but let's go ahead. Now I invite. Yes, madam. Seema, Markande sir wanted to speak something. I think he has raised their hand. Okay, So- yes, ma'am. He is most welcome to speak. I don't know where is he. Dr. Markande Okay. sir. I don't think he is here, madam. Go ahead. ठीक है, it's okay. Yeah. You can continue, no problem. Please. Yeah, ma'am, there's an electricity problem at my side. Can you please continue? Or should I just, because my connection is also unstable. Okay. Yeah, I request Honorary Secretary ISA National Dr. Naveen Malhotra sir to say a few words and give good wishes to Dr. Roshan. She is really hardworking, so courageous. I'm really inspired, Roshan. Whenever I listen to you, I really get inspired each and every moment, and I find new vision to my in my path. Thanks Sir, a lot, ma'am. can you- Thank you. Yeah, over to Naveen Malhotra sir. Thank Sir, you, Dr. please. Maya Vallarao. Yes, I'll begin first with Dr. Roshan only. And I like to say, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. So this is for madam and the
which you have shown over the years since 2011, down to MBBS to your MD. And it's very nice listening to you. But dear Dr. Maya Bhalerao, President SAPC, Dr. Seema Suryavanshi, very dear Dr. Sumit Lad, Dr. Manisha Katekar, President ISA Maharashtra, Dr. Avinash, Secretary, and very, very dear Dr. Anjali Bhure, Vice President ISA National. Greetings to ISA Maharashtra and ISA SAPC for arranging back-to-back programs on International Women's Day. And yes, I have seen whole of the video, which was released by ISA Maharashtra day before yesterday. Excellent. Salutes to the concept. Salutes to the beautiful and wonderful women anesthesiologists. And yes, today, Dr. Maya Bhalerao, to be honest, it was a very, very long day for me clinically also. And since 4 a.m., I am back to back clinical and academic and webinar work going on. But I enjoyed every bit of it. And I listened to Dr. Swati also. Ma'am, you have really said about family chemistry. I could understand some bit, some which was in Marathi. I was trying to gather, but I can say that when we talk of family, I want to say कि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो परिवार ही है जिसके लिए आप पूरी दुनिया हैं. So that is the importance of family and family members. So both the speakers were exceptional and excellent, and I convey my good wishes. And I'm sorry I've joined a bit late because of some connectivity issues. And asked me, "आप Women's Day के ऊपर आप क्या कर रहे हैं?" So this is the program of Women's Day. What are you doing there? So, and you should give time to me. Because don't worry, I'm doing a justifiable job as a national secretary to be there with my branch at SAPC. Heartiest congratulations to all of you, and thank you for inviting me here. Once again, I convey my warm regards to the women anesthesiologists, the role model across the country, whether it is at city level, state level, and national level. Few hours ago, there was a talk going on about leadership roles by the women anesthesiologists. And I am a firm believer that all the women anesthesiologists are playing leadership roles at every stage, whether it is at home, whether it is at the department, whether it is at association level, city, state, or national. Leadership positions, whenever they want, they can take it because they have their own priorities towards their family commitments, more commitments than males. I've got no reluctance in confessing that they are more dedicated, more sincere, more disciplined, better human beings. Salutes to all the women anesthesiologists. Thank you for inviting me here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you, Malhotra sir, for your kind words of appreciation and motivating us once again. We are very, very grateful to you, sir. You are with us today, sparing us valuable time. Now I invite Dr. Anjali Bhure, madam, who has also graced this webinar, to express her feelings regarding it. Good evening, all. I'm going to take 2 minutes. So, Maya, as you promised me, 2 minutes. So these 2 minutes are mine. So for Dr. Swati Gadge on achieving family harmony, I think she has very nicely advised us to strive to be bright, enfolding our family members with compassion, positive approach we should have. We should respect each other. If not being together, at least we should be accessible, we should be good listeners, and some chemical reactions should be slow. That is what has really impressed me. Sometimes we can say that we also can err. And your funda on 100 by 100 was a very good concept. As we expect from our children to have 100 and 100, they also expect us to be 100% correct. Then
Those who say I'll do it and who are willing to take a challenge even if they are alone, they are true winners. The determination, the commitment to take action yourself is the force that leads to victory. May your faith be the cornerstone of your life, helping you to weather storms. Brave, bold, and beautiful. You are a shining star, Dr. Roshan. Thank you very much. And I think Earth is happy when women smile. So thank you once again. Thank you. Ma'am, you have really summed up the whole webinar so beautifully. The talks of both our speaker, it's really wonderful. Thank you so much, madam. Maya, madam, can we conclude the webinar, or are there any questions or someone wants to? Yeah, somebody wants to speak about our two esteemed speakers. They can have a words and give them some good wishes also. No problem. माया, मी 1 मिनिट बोलू? Yes, madam. Yes. Yeah. खूपच सुंदर प्रोग्राम झाला. दोन्ही स्पीकर्स खूपच छान बोलले. आपल्या पहिल्या स्पीकर स्वाती गाडगीळ यांच्याबद्दल मला सांगायचं की ती बोलली तर खूपच छान, पण आज तिच्या स्टेटसवर तिने अँटी स्पिटिंग वरचा एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. अतिशय सुंदर आहे तो. खाली जो ह्याच्यामध्ये आपण अंडरब्रिजच्या खाली जो रस्ता असतो त्या ठिकाणी त्यांची जी अँटी स्पीड कंपॅन आहे ते सगळेजण मुलं चित्र रंगवताना वेगळी वेगळी दाखवलेली आहेत आणि त्याचा व्हिडिओ खूप सुंदर काढलेला आहे. तर कोणी जे स्टेटस असेल ते बघा. खूप सुंदर आहे स्वाती तो व्हिडिओ. खरंच खूप आवडला. आणि ते कंपॅन जे करतेस तो की बाबा थुंकायचं नाही, हा प्रचार खरं आपल्या भारत देशामध्ये खूप महत्वाचा आहे. त्याच्यामुळे बरेच संसर्गजन्य रोग नाही होणार. आणि दुसरी मोटिवेशनल स्पीकर रोशन म्हणेल की मी एवढंच म्हणेल की मंजिल मिले ना मिले ये तो मोहब्बत, ये तो कुदरत की बात है, मगर कोशिश भी ना करे ये तो कोई बात नहीं है. असं ते रोशन शेखनी अपनी कोशिश से आपने तो दुनिया का कायदा ही बदल दिया है पूरे हिंदुस्तान का हाईकोर्ट में जाके. सो आपको मुबारक हो और धन्यवाद कि आपकी इतनी मोटिवेशनल ये जर्नी है कि कोई भी सुनेगा तो वो आपका ये जो पढ़ा कि बाबा भगवान उतना ही देता है अपने झोले में जितने हम लोग सहन सकते हैं संकट. That sentence I really liked and we should go for it. Thank you, Roshan. Yeah. Dr. Roshan has undergone multiple surgeries. I think she was admitted for 3-4 months. Then she had some problem in her spine also. She had to undergo for surgery for that some problem. And later on, she has struggled so much. And my God, she has a motto that she wants to establish her pathology laboratory and she wants to give free treatment to her patients. That is so great, Roshan. I'm really amazed to see your courage. Wonderful, wonderful. Thank you, Whatever ma'am. help you need, we are definitely there. We doctors, we can help you out in establishing your pathology laboratory, or maybe whatever guidance you want. We are always there to support you as a elder sister, elder brother, or maybe friends. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, we can conclude the webinar today then. Okay, madam. To conclude, and at the end, I would like to thank both of our today's speaker, Dr. Swati Gadgir madam and Dr. Roshan madam, from the depth of my heart. Thank you, madam. I express my sincere thanks on behalf of the team SAPC to Dr. Anjali Bhure madam, Dr. Naveen Malhotra sir, Dr. Katikar madam, who took out their precious time and they were with us today. Thank you, Janika Technologies and Maharashtra State Chapter ISA for their technical support as usual. And a big thank you to all the delegates and the listeners for joining the today's events. Hope the talks given by the speaker were motivating, inspiring, and appealing to you all. I hope you all enjoyed today's webinar. Good night to everyone. Yes. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so all much. It delegates. was wonderful session. Thank Good you. night. Excellent Yes. program. Yes, thank Maya, you. Sima, मस्त Thank you, झालं. ma'am. Thank you.
Excellent program. Thank you. Yes. Thank you so much. Varsha Thanks a madam, lot. you can stop the recording so that we can have just a 5 minutes chat. Actually, she has gone. I'll stop the recording. Yeah, she's gone. Ma'am, I've stopped the recording. You can go. You can have a talk. Yeah, Thank yeah. Malhotra sir and Anjali madam, Manisha madam, SAPC had organized like 3 programs. One program is for our subordinates or maybe maids or maybe staff. So we decided to felicitate these subordinates, the people who support us in day-to-day life. So all SAPC ladies, they have appreciated their maid, hospital staff by giving a small token of love, like some chocolate or maybe some gift, books, anything. So we did that, and around 20-25 girls, we appreciated our subordinates. That was the first program. Then we had a contribution, all boys and girls. We started, like we did some collection, and we are going to donate this to blind school, which is only for girls. So on the occasion of International Women's Day, we're going to give them some medical equipments, which are talking equipments like thermometer. Then it will tell you, because those girls are blind. So they can have a thermometer which will talk. Yeah, your temperature is like this, your saturation is like this. So they're going to buy some equipment. So this is second activity. Third activity is having 2 esteemed speakers with us today. So this was a third activity, like Swati madam and Roshan, Dr. Roshan. And fourth activity is we're going to have a get together where we all girls will interact with each other. So this way we are going to celebrate the week. Thank you so much. Your Manisha madam's inspiration, her motivation is always there with us. Anjali madam is also there, and Malhotra sir is also there. So we are blessed to have such a beautiful dignitaries. We are really thankful to all of you. And our delegates, they are also wonderful. Our executive team, they are very much supportive. Thank you so much. Thank you. Good to know all Chetna is there. I think Chetna, you want to say something? Hello, Chetna. Hi, I just joined. I'm sorry. I thought it's past Okay, 10, but no still I problem, thought no I'd problem. take a chance and join in. I'm really sorry for joining. Yeah, Yes, but congratulations to all of you for that cultural club video also, which has Maya Balera madam and you and Dr. Manisha and Dr. Anjali Bure there, along with other women anesthesiologists. And nice to know we'll do that, good sir. activity going on in SAPC. And I'm very sure Dr. Maya Balera will come up. 2 more activities are lined up. One ISS sponsored West Zone PG Assembly, which she is working very, very hard. And one surprise item, online ISA Art and Literary Club Fest in few months from now as a part of ISA Platinum Jubilee celebrations. So, yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. I'm very sure that it will be a roaring success. Wish you all the best. Yes, sir. Good night from my side. Thank you, sir. Thank you. Thank you. thanks, sir. Thank you, sir. Yeah, we can. Good night, everyone. Good night, madam. Good night. Good night. Good Good night. night, Yeah, everyone. we can end up the meeting. No Yeah. problem. Good night. Good night. Good night, madam. Good Good night. night. Good Good night. night, Maya. Chal.